चलो जी, अभी लो कार्बोनेट्स कंपाउंड। Most of the things are self-evident. कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हम हालांकि हम लोग नोट सारा करते चलेंगे, बट कुछ कुछ बातें जहाँ पे शायद हेल्प लगेगा वहाँ पे। So I'm going to read through the important parts. पहला तो कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या होता है? C. एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। जनरली जो हम C6 पढ़ते हैं वो C612 होता है। मेटल है, नॉन मेटल है? ठीक। देखो छोटी छोटी बात है। All living things, that is plants, animals, etc., are made up of carbon-based compounds, which are called organic compounds. ठीक है। Now sometimes you have been asked कि बताओ इनमें से कौन सा कार्बन बेस्ड है, कौन सा कार्बन बेस्ड नहीं है, या कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है। तो one you will get a list, you will when you go through the book you will get a list of items जो कि कार्बन बेस्ड होता है और ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक होता है। बट एक थंब रूल है, if you can feel क्या बोल रहा हूँ, कि अगर किसी चीज को रखने से वो सड़ जाए, किसी चीज को रखने से वो सड़ जाए, देन इट इज ऑर्गेनिक। ठीक, क्योंकि सड़ता कौन सा चीज जो मरता है? अरे सड़ता कौन जो मरता है? मरता कौन जो कभी लिविंग था, राइट? अगर लिविंग के लिए जो ना, राइट? सो if you ever have a doubt, then probably that is going to help कि क्या इसको रख देने से, बहुत टाइम रख देने से क्या ये सड़ जाए। अगर इनऑर्गेनिक होगा तो सड़ने के चांसेस नहीं। से कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन, और इसको रख दोगे तो वो सड़ेगा। इट माइट ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, बट जो सड़ा जिसको कहते हैं सड़न नहीं। ठीक, देखो, a large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds. A large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds. कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख लो ताकि ध्यान रहे कि ये सब होता है। जैसे ग्रेन्स, pulses, sugar, tea, coffee, fruits, vegetables, ये सारे एडिबल आइटम्स हैं जो जिसमें कार्बन होता है। These are consumable edible items. कुछ कुछ होते हैं जो हम यूज करते हैं, खाते नहीं बट यूज करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया। कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिएस्टर, these are all examples जहाँ पे कार्बन यूज होता है। Then all fossil fuels contain carbon, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया। These are all examples जहाँ पे कार्बन हो गया, डीजल हो गया। Then there are some more which we use, जैसे पेपर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, लेदर हो गया, मेडिसिन हो गए, और नॉट ऑल मेडिसिन, डाइज हो गए,
So there is a large variety. Again, जितना किताब पढ़ोगे उतना एग्जाम्पल दिखते चलेगा, उतना फेमिलियरिटी बढ़ती चलेगी। तो अगर सब में कार्बन है तो हमें कार्बन टेस्ट करने आना चाहिए कि कार्बन है या नहीं। कार्बन टेस्ट करने का तरीका, किसी भी चीज में अगर कार्बन है या नहीं है उसको टेस्ट करने का तरीका, टेक अ स्मॉल बिट एंड देन burn it. If you burn it, it will give some gas, collect that gas and test it for CO2, right? CO2 का टेस्ट only पता है। We can test the presence of carbon in the material. We can test the presence of carbon in the material on the basis of the fact that carbon and compounds burn in air to give CO2 gas, which turns lime water milky. Which turns lime water. What was the reaction for this? Lime water milky reaction. Ca. Lime water का formula? Calcium hydroxide. When it reacts with carbon dioxide, it gives CaCO3 along with hydrogen gas. ये जो है, this is the reason for milkiness. ठीक, next देखो bond formation in carbon. Bond formation in carbon. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Kl 2, मतलब since the atomic number of carbon is 6, its electronic configuration is 2,4. ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, चाहिए कितने? या तो 8 या फिर 2 से भी काम चल जाएगा, राइट? व्हिच मींस it either has to give 4 electrons away or accept 4 electrons. दोनों ही बहुत आसान but difficult. If you add electrons, what happens? मान लो ये कार्बन एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स है। अंदर न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्जेस? हाउ मेनी पॉजिटिव चार्जेस? 6, राइट? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स C12 की बात कर रहे हैं। तो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। If you lose 1 electron, what happens? ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये बाकी के नेगेटिव चार्जेस को जोर से पुल करेगा, आस्ते पुल करेगा? जोर से, राइट? एक नेगेटिव चार्ज निकल गया तो 5 ही नेगेटिव बच गया और 6 पॉजिटिव बच गया, तो पुल बढ़ जाएगा। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, कम एनर्जी चाहिए होगा? ज्यादा एनर्जी चाहिए। Then if you push back the 2, तो बाकी निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी। So at some point of time it becomes not feasible to take out any more electrons. Similarly, if you want to add some electrons, अगर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, राइट? लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो बढ़ा, एक और बढ़ा दो और रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो अगर 4 है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एटम जो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसके लिए न 4 इलेक्ट्रॉन दे पाना आसान है, न 4 इलेक्ट्रॉन ले पाना। क्या करेगा ये करेगा शेयरिंग, एंड इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। और देने और लेने से जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड? सिंस इट इज नॉट फीजिबल
to either remove 4 electrons from the carbon atom, since it is not feasible to either remove 4 electrons from the carbon atom or gain 4 electrons ब्रैकेट मतलब because of energy considerations, ये दोनों कहीं आते हैं, दोनों में एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी because of energy considerations. Therefore carbon does not form ionic bonds. However, carbon can achieve inert gas structure. By sharing 4 electrons therefore the valency of carbon atoms is 4, or we say that carbon is tetravalent, और उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. Tetravalence of carbon is represented by these 4 lines. ये बता रहा है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और कितने ले सकता है, कितने शेयर करेगा, 4. Next we go. Important property of carbon. It is found that carbon atoms can form long, complex and stable molecules it is found that carbon can form long, complex and stable molecules. This property is unique for carbon. And is at the core as to why a large number of compounds found are made up of carbon atoms. So if you look at things on earth, अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे अगर आंखें घुमाओगे, chances are if you are standing outside, chances are that out of every 2 or 3 things that you look at, one of them will be made of carbon, right? बहुत number, the number is in millions. Millions of compounds formed. In fact, one of the reasons that life exists is because of carbon. अगर कार्बन नहीं होता तो most probably life evolve नहीं करता. What is the reason? Because life के लिए किस तरह के मॉलिक्यूल चाहिए, सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, राइट?
formation of gene, right? Formation of chromosome. These are very complicated molecules, right? अब ये molecules जो है ये उन एटम से नहीं बन सकता जो खुद छोटे-छोटे से molecules बना रहे हैं, उसके लिए हमें बड़े-बड़े molecules चाहिए और बड़ा molecule बनाने का तरीका कौन प्रोवाइड कर रहा है? कार्बन, राइट? तो बड़ा भी बनेगा और स्टेबल भी बनेगा। बड़ा होता और अनस्टेबल होता टूट जाता बार-बार, तो वो भी कोई काम का नहीं था। तो अब सवाल है कि क्यों ऐसा कर पा रहा है कार्बन और बाकी कोई ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? ठीक, तो रीजन फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है बहुत बार। रीजन फॉर, रीजन क्या रीजन पूछा है, किस चीज का रीजन? कि पहला सवाल कैसे बन सकता है समझिए। अगर मान लो सवाल पूछा कि क्या रीजन है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक, उसका रीजन वही होगा जो भी हम लिखने वाले हैं। अगर पूछा जाता कि क्या रीजन है कि कार्बन लंबे लंबे कंपाउंड बनाता है, उसका भी रीजन वही होगा जो भी हम लिखने वाले हैं। अगर बोला था क्या रीजन है कि कार्बन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं, उसका भी रीजन ये होगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू राइट टू रीजंस एंड देन यू कैन पिक एंड चूज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इतने ज्यादा। सी अंडरस्टैंड दिस, डिड यू हैव अ चैप्टर कॉल्ड oxygen and its compounds? Did you have a chapter called nitrogen and its compounds? इसको क्लास 12 में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ो, which will be 40 to 60% of your syllabus. In fact, अगर टोटल नंबर ऑफ जो तुम ये पढ़ने वाले हो, कंपाउंड पढ़ने वाले हो, तो कार्बन कंपाउंड्स will far outnumber your other compounds. बाकी सबको मिला के 1% में नहीं पढ़ने वाला जो कार्बन कंपाउंड पढ़ने वाला। Right? So what is the reason of this big number? पहला रीजन है, इसको कहते हैं सेल्फ कैटिनेशन। इसको कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन क्या है? The property of carbon, the property of carbon to form long chains by combining with other carbon atoms giving rise to extremely large number of carbon compounds is called self-catenation. Is called self-catenation. Thus, a long chain of carbon atoms acts as a backbone on which other atoms can acts as a backbone on which other atoms can attach themselves to form different kinds of molecules. Okay, so get a sense of what is going on. देखो, मान लो यहाँ पे एक कार्बन एटम, how many electrons can it share? How many electrons can it share? 4. तो करता क्या है, ये एक और कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है। So now this single line represents a bond, single bond, right? यानी कि इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है? और इनका बाकी इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा। This goes on and carbon keeps on forming long chains. ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, कैसा चेन का,
अगर वो ऐसा चेन बनाने लगे, अब ये जो बाकी वैलेंसीज बचे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम क्या लगाएं। जैसे मान लो एक वेरी इजी वे और इजी कंपाउंड इज टू पुट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। एक एक हाइड्रोजन जो है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। देखो एक कंपाउंड बनेगा, राइट? यहाँ पे इफ आई टेक अनदर कार्बन एंड जॉइन दिस एंड टेक हाइड्रोजन, एक और कंपाउंड होगा, तो अलग अलग कंपाउंड। तो जैसे जैसे कार्बन अपना साइज बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे वी विल हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि बाकी जो वैलेंसीज बचे वहां पे कोई भी एटम लगा दो, नया चीज बन जाए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे अटैक यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, क्लोरीन की वैलेंसी 1, सो इट्स अ न्यू कंपाउंड, राइट? ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है ये एकदम चमत्कारी है कि लंबे लंबे वो चेन आता है, ये बैकबोन बन जाता है, राइट? दिस इज लाइक अ बैकबोन, और बाकी के जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर चिपक लेते हैं, और जैसे जैसे चिपकते चलता वैसे वैसे नए नए कंपाउंड बनते चलते हैं। ये हो सकता है कार्बन यहाँ पे चिपक जाए, राइट? सिर्फ स्टेट बनने से जरूरत नहीं, हो सकता है ऐसा चिपक जाए, दैट विल बी अनदर कंपाउंड। बट ये क्यों कर पा रहा है ऐसा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक तो कर रहा है इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कार्बन विल मेक विल बी वेरी लार्ज। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज इट एबल टू मेक? बाकी कोई क्यों नहीं कर पा रहा? जैसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि इसका वैलेंसी 4 है, इसलिए इसके पास इतने चॉइसेस हैं, और किसकी वैलेंसी 4 होता है? कार्बन के बाद कौन इसका वैलेंसी 4 है? सिलिकॉन का, है ना जी? सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन सल्फर, सल्फर सिलिकॉन को बोलो, सल्फर का कितना होगा? 16। तो कितना होगा उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 2 8 4 सिलिकॉन 284 सिलिकॉन, सिलिकॉन का 284, तो वैलेंसी कितनी? 4, टेट्रावैलेंट। तो इसके साथ भी देखना होना चाहिए सिलिकॉन, सिलिकॉन तो इसके भी प्लांट्स एंड एनिमल्स बनने चाहिए, तो सिलिकॉन बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं मिलते, राइट? इनफैक्ट इसके बड़े बड़े चेंज भी नहीं मिलते। क्या रीजन है? वही रीजन इसका सेकंड रीजन जो हम लोग लिखने वाले हैं। तो पहला क्या समझ लीजिए, समझ दो दो इंपॉर्टेंट रीजंस। क्वेश्चन समझ लो और फिर इसका आंसर समझो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इतने ज्यादा क्यों है? उसका आंसर क्या है? ज्यादा कब बन पाएगा? जब लंबे लंबे चेन बनेंगे। लंबे लंबे चेन बनने का रीजन, पहला रीजन सेल्फ कैटेनेशन, राइट? कार्बन हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ joining with itself to form a backbone, and then for the remaining valencies other elements can attach. जैसे अगर हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाए तो कुछ बनेगा, कार्बन ज्वाइन हो गया कुछ बनेगा, क्लोरीन ज्वाइन हो गया कुछ बनेगा। ये पहला रीजन। तो फिर सवाल आता है कि अगर टेट्रावैलेंसी ही वो रीजन था, ये रीजन क्यों आ रहा है? बिकॉज़ इट इज टेट्रावैलेंट, राइट? तो अगर टेट्रावैलेंसी वो रीजन था तो सिलिकॉन में क्यों नहीं? क्योंकि सिलिकॉन में तो टेट्रावैलेंट है। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द साइज ऑफ द एटम। सोचो कार्बन जो है उसमें ऐसे प्रोटॉन्स है 6 और ये इलेक्ट्रॉन्स है, और सिलिकॉन जो है उसमें कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर है, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसके बाद 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से रिलेटिवली दूर, रिलेटिवली पास, दूर। अगर रिलेटिवली दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच सकेगा, कम खींच पाएगा, कम खींच पाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड मजबूत होंगे कि वो बॉन्ड वीक? So because of the size of the silicon atom compared to carbon atom, the bonds that are formed by the silicon atom are weak and therefore not very stable. तो लंबे लंबे नहीं बना सकते, बनाता है कुछ कुछ बट इतने लंबे bonds नहीं बना पाता, उससे वेरी गुड। क्लियर है? देखो सेकंड पॉइंट, the formation, second point, the formation of strong bonds by carbon atoms, the formation of strong bonds is the reason
Bicarbon can form long chains of carbon molecules. The reason for the formation of strong bond, next line. The reason for the formation of strong bond by the carbon atom is its small size. Is its small size. Due to the small size, the nucleus of the carbon atom, due to the small size, the nucleus of the carbon atom can hold the pairs of electrons very strongly, leading to the formation of strong covalent bonds. Leading to the formation of strong covalent bonds. Here, एकदम क्लियर होना चाहिए क्या चल रहा है. दो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट. क्या ऑब्जर्वेशन? पहला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज वेरी लार्ज. किस सवाल का आंसर देना चाह रहे हैं, सवाल समझते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या था कि नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज. इतने कार्बन मॉलिक्यूल्स देयर इन मिलियंस. तो सवाल उठा कि भाई इतना कार्बन मॉलिक्यूल्स क्यों बन रहा है, बाकी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बन रहे. तो उसका सवाल का जवाब दो पार्ट में मिला. पहला पार्ट क्या था? सेल्फ एक्टिवेशन, यानी कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे. और बॉन्ड बनाने का रीजन एक था टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंट होने के कारण वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड, अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाते थे. सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा. और साथ ही बाकी के जो वैलेंसीज बचे हुए थे वहां पे अलग अलग एलिमेंट्स अटैच हो पा रहे थे. सो दैट वाज वन रीजन कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वर ह्यूज. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि अच्छा ठीक है कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि इतना बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल जो संभल जाए, स्टेबल हो. उसका जवाब कहां से आया? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कार्बन एटम. क्योंकि कार्बन एटम का साइज छोटा है, इससे जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे. न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन पास है. अगर किसी दूसरे एलिमेंट की बात करें, जैसे सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन में टेट्रावैलेंट है बट इतना सारा बॉन्ड नहीं बना पाता. रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर है, साइज जो बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जो दूर है, इसलिए जो बॉन्ड बनते हैं वो वीक बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इतने सारे नहीं बनते. क्लियर एकदम दोनों पॉइंट. नेक्स्ट देखो, अकरेंस ऑफ कार्बन. अकरेंस ऑफ कार्बन. अकरेंस ऑफ कार्बन मतलब कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है. There are two basic occurrences. One is free state. फ्री स्टेट में पाया जाएगा. और दूसरा कंबाइंड स्टेट. सेकंड इज कंबाइंड. फ्री स्टेट मतलब कार्बन अकेला है, किसी के साथ कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बना है, उसको फ्री स्टेट कहेंगे. कंबाइंड स्टेट ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन के पास आती है. Now, free state में there are three states that have been found so far. One is graphite. We'll talk about this. Then is diamond. These are the major two forms. और एक recent डिस्कवरी है बकमिस्टर फ्लोरीन.
So these are the three free states. Combined state में एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा और एक ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा. इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जितने कार्बोनेट्स हैं वो सारे हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो गया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. देन इधर में जितने भी फूड फॉसिल्स और मोर और लेस कमिंग फ्रॉम लिविंग थिंग्स, well these are all examples of organic compounds. इसमें फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब ज्यादा फूड वाले भी हो जाता है. फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी लिविंग बीइंग से कनेक्टेड है, those are examples of organic. ठीक, हमारा काम है इन्हीं को एक एक करके पढ़ना. So we'll start with free state and then at a later stage we'll see combined state. ये जो है, ये तीनों ही अगर कार्बन है, समझना, यहाँ पे तो कार्बन किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो समझ में आता है कि अलग अलग चीज है. यहाँ पे तीनों ही कार्बन है. अगर तीनों ही कार्बन है तो तीन अलग अलग क्यों है? ठीक, अगर तीनों ही कार्बन है तो तीन अलग अलग क्यों है? तो ये जो अलग अलग है इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स. तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, लिख लो एक लाइन. The various physical forms in which an element can exist, the various physical forms in which an element can exist are called allotropes of that element, are called allotropes of that element. ALLOTROPES, ALLOTROPES, allotropes of that element. Carbon exists in three solid forms. Carbon exists in three solid forms. That means allotropes, three allotropes. That is graphite, diamond, and Buckminster fluorine. This is by the name of somebody. इसका नाम था. इसका स्टेडियम बनाया हुआ है इंग्लैंड में, लंदन में गए स्टेडियम. तो जो इसका मॉलिक्यूल मिला, इस फ्री स्टेट का मॉलिक्यूल मिला, that resembles that shape. This is the shape of a football, by the way. फुटबॉल, तो फुटबॉल का जो शेप होता है उस शेप में वो मॉलिक्यूल मिला. That is why the name Buckminster fluorine. फुटबॉल ही करते हैं, वर्ल्ड कप में यूज होगा. ठीक, नेक्स्ट लो, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू कॉमन इलेक्ट्रोड्स. Diamond and graphite are the two common electrodes, while Buckminster fluorine is a recently discovered electrode whose properties are still being investigated. ठीक है, so let's focus on properties of electrodes. तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे ग्राफाइट एंड डायमंड. इसका कुछ भी नहीं पता. So first important property that you should know, लोग बताओगे डायमंड के बारे में. लेट्स से कलर, कलरलेस. What about transparency? ट्रांसपेरेंट होता, उपयोग होता है ट्रांसपेरेंट. कलरलेस,
transparent, having extraordinary brilliance. Brilliance मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, brilliance मतलब चमकने वाला, राइट, चमक होता है। extremely hard, in fact is the hardest known substance. It is one of the hardest known substance. इसीलिए इसको किसमें यूज करते हैं, हम लोग यूज में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग इसको कटिंग के लिए यूज करते हैं, ग्लास कटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, राइट। तो अगर देखोगे कोई ग्लास काटने वाला जो रॉड रहता है उस पे डाल लगाता है, तो जो सामने रहता है दैट इज अ पीस ऑफ डायमंड एक्चुअली। Then does it conduct electricity? No. Good conductor, bad conductor? Does not conduct electricity. Does not conduct electricity. ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो तो जो भी इसके प्रॉपर्टीज से मैच करेगा कार्बन का प्रोड्यूस, कार्बन, इफ यू बर्न इट यू विल गेट कार्बन। डोंट डू इट, डोंट इवन थिंक ऑफ ट्राइंग दिस विद योर मदर्स विलेज। अगर घर में है ये एक्सपेरिमेंट घर को मत करो, तो तुम्हारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है। तो इससे सिर्फ मान लो मेरी बात कैसा होगा। ऑलराइट, सो इससे एक सवाल बनता है कि कैसे प्रूव करोगे कि डायमंड जो है वो कार्बन है। कैसे प्रूव करोगे? डायमंड लेके जला देंगे एकदम डिस्ट्रेक्ट, तो जलाएंगे तो क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, CO2 गैस बन के। कैसे पता करेंगे कि CO2 था? कलेक्ट करेंगे और लैबोरेटरी टेस्ट करेंगे। So if you are asked, इस बताओ कैसे प्रूव करोगे कि डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ है? This is what इसका सिंबल क्या होगा? D। कार्बन ही है ना जी, सिंबल इज स्टिल कार्बन। पिछले 25 मिनट से देख रहा हूँ, 25 मिनट। I don't know what is being transferred from one to the other. It is definitely not knowledge. Next, मैं भी लगता हूँ कि ऐसा कब देखा मैं तो पढ़ा। Next, graphite. पहले से ही चल रहा होगा। चलो जी, ग्रेफाइट बोलो कलर। ग्रेफाइट समझ देखो, पेंसिल में लिख दो कौन सा कलर करता है? ग्रे, ब्लैक। चलो ग्रेइश ब्लैक। द कलर ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक। ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है? ओपेक। हार्ड और सॉफ्ट? सॉफ्ट। सॉफ्ट। अच्छा, इसमें एक और था हेवी, इस वक्त तो हेवी। ग्रेफाइट हेवी और लाइट? लाइट। Conductivity does not conduct. Don't do that. People have tried to put the pencil in the box. बाहर का जो सराउंडिंग है that's good, वो बच जाएगा, but if you put your hand in that middle center वाला black वाला part then you are gone.
Okay, sir. Chemical properties. We burn it. Again, you will get CO2. और टेस्ट जो है सेम होगा. तो सवाल है कि अगर दोनों कार्बन था, दोनों एक ही चीज है, तो फिर दोनों की प्रॉपर्टी इतनी जुदा कैसे? दिस इज लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो भी ये करेगा उसको उल्टा कर रहा है. ये कलरलेस वो पे मतलब ट्रांसपेरेंट तो लो पे, ये एक्सट्रीमली हार्ड तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट, वो हेवी तो ये लाइट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा कार्बन बट सेम ही है, कार्बन ही है, राइट. तो अगर दोनों कार्बन है तो दोनों का प्रॉपर्टी इतना अलग अलग क्यों है? ये भी एक अपने आप में सवाल है. अब सवाल का आंसर किससे आता है? तो नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. Structure of diamond and graphite. Diamond has a crystal structure. Diamond has a crystal structure which is a giant molecule of carbon atoms, which is a giant molecule of carbon atoms, where each carbon atom, in the diamond crystal is linked to 4 other carbon atoms, where each carbon atom is linked to 4 other carbon atoms by strong covalent bonds. The 4 surrounding carbon atoms form the vertices of a regular tetrahedron, Thus, next slide. Thus, the diamond crystal is made up of carbon atoms which are powerfully bonded with one another. Which makes the structure of diamond very rigid. Rigid मतलब what is rigid? I am very rigid. I'm very rigid. इसका आंसर यस का नहीं होना चाहिए. I'm very rigid. rigid मतलब एक तरह से अटल, राइट, अपने जगह से हिलने डुलने वाला नहीं, राइट. तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से और इसका स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से चीजें अपनी जगह से, कार्बन एटम अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकती. अगर हिल डुल नहीं सकती तो फिर वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा. When can, समझिएगा, मैं इस पेन को क्यों मोड़ नहीं पाता हूं इस तरह से कम लगा के, और इसको मोड़ देता हूं और इस वायर को मोड़ देता हूं, राइट. इन दोनों में क्या फर्क था? एक मोड़ गया, दूसरा नहीं.
क्योंकि इसके बॉन्ड्स रिजिड है, राइट, इसके बॉन्ड जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो जिसका बॉन्ड ज्यादा रिजिड होगा वो उतना हार्ड होगा, उसको मोड़ना उतना डिफिकल्ट। This rigid structure of diamond, this rigid structure of, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, कम टू दिस, पहले लिख लेते हैं। This rigid structure of diamond makes it a very hard substance. इसमें ना एक चीज और ऐड करते हैं ताकि उसके एक्सप्रेशन में ऐड, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, हाई डेंसिटी, लेकिन कार्बन डायमंड की बात चल रही है, डायमंड का डेंसिटी इज वेरी हाई, फिजिकल इसमें प्रॉपर्टी में डेंसिटी इज हाई, बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो वेरी हाई, बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो हाई, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी So these are a few properties जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए थे. It is hard, rigid, high density, high boiling point and non-conductor. Now इनमें से किसी पे भी सवाल आ सकता है कि बताओ डायमंड जो है वो हार्ड क्यों है, बताओ डायमंड जो है वो हाई डेंसिटी क्यों है, डायमंड जो है वो सब बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बताओ डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर क्यों है. ठीक, तो सबका आंसर कहां से आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. तो समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है ये इनको एक्सप्लेन करने में मदद करता है. तो पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, सुनना ध्यान से. कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4. नाउ इन डायमंड व्हाट हैपेंस इज, चलो पहले उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर क्या होता है. टेट्राहेड्रॉन जो है पिरामिड है, तुम लोग पिरामिड समझते हो, पिरामिड की क्या खासियत क्या है, वो इजिप्ट में क्या है पिरामिड की खासियत, उसके जो साइड वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, राइट, ऑल ऑफ देम आर ट्रायंगल्स, राइट. पिरामिड की खासियत है, पिरामिड का डेफिनेशन ये, इसके जो साइड वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर. उसका बेस कैसा होता है, बेस कैसा भी हो सकता है, बेस कैसा भी हो सकता है. अगर ट्रायंगुलर बेस हुआ तो उसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन. अगर बेस ट्रायंगुलर हुआ तो उसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन. अगर स्क्वायर बेस हुआ तो उसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिड. अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो कहेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड. अगर पेंटागन हुआ तो कहेंगे पेंटागन पिरामिड, राइट. तो पिरामिड अलग अलग तरीका हो सकता है, बेस जो है चेंज होता रहेगा, साइड वॉल्स हमेशा ट्रायंगुलर रहेंगे. That is the difference between pyramid and prism. Prism में पढ़ा तुमको, पिरामिड और प्रिज्म में बेसिक अंतर. प्रिज्म का जो साइड वॉल्स होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, राइट, या तो रेक्टेंगुलर सामने और पीछे ट्रायंगुलर होते हैं, बट साइड वॉल्स आर. So if I can try and draw regular मतलब regular tetrahedron, regular मतलब all the triangles are equilateral, okay, all the triangles are equilateral. I'm going to try and draw this. थोड़ा सा अपने visual cortex को जगाओ. So this ABC is the base of the triangle, triangular base है सर, और फिर तीनों तरफ से 3 triangles. You see the 3D figure here. सब लोग triangular base, ABC is the triangular base, और ये पीछे से. This is the structure that we are talking about. तो अब ये हो गया स्ट्रक्चर. अब सवाल है कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो कार्बन कहाँ है, राइट. तो स्ट्रक्चर में याद रखना
टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, पर जो कार्बन है वो कहां बैठा हुआ है, इसके चारों बटे। सुनना ध्यान से, ये कौन से कार्बन, ये वो कार्बन है जिन्होंने बॉन्ड्स बनाए हैं, तो जिसके साथ बना वो कहां पर है, वो इसके सेंटर में बैठा है। सो ये तो कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाता है, मान लेते हैं, आई होप इट विल मेक सम सेंस। ये सेंटर वाला कार्बन है, यहाँ पे सेंटर वाला कार्बन है, और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ये कार्बन इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी बॉन्ड बना है, राइट। सो इफ यू मेक दिस विल बिकम अ ट्रायंगल, कैन यू सी दैट, दिस विल आल्सो बिकम अ ट्रायंगल, दिस विल आल्सो बिकम अ ट्रायंगल एंड द बेस इज आल्सो ट्रायंगल। तो अगर इस सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रॉन, राइट। इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कैन यू सी दैट स्ट्रक्चर सब लोग, क्योंकि इसी से फिर आगे की कहानी समझ में आएगी। नाउ दिस इज प्रीटी क्लियर, जनरली बच्चा समझ जाता है, बट जो नहीं समझता है वो ये है कि ये एक कार्बन की कहानी है, राइट। ये इस कार्बन की कहानी कि इसके चारों जो बॉन्ड्स हैं उनके सारे कार्बन कहां बैठे हुए, इन द 4 वर्टाइसेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। बट यही कहानी इस कार्बन की भी, ये कार्बन भी एक अपना टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, और वो जो है वो भी 4 से बना है, राइट। वो भी कुछ ऐसा बना रहा होगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, एक तो ये बन चुका है, एक यहाँ पे ऐसा, एक यहाँ पे ऐसा, एक यहाँ पे ऐसा, यहाँ भी तीनों, राइट। फिर ये भी एक बना रहा है खुद का, फिर ये भी एक बना रहा है, फिर ये भी बना रहा है, एंड दैट गोज ऑन एक्सपेंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो अब सोचो जो स्ट्रक्चर बनेगा, और ये सब मजबूत बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ये मजबूत बॉन्ड्स हैं, तो अब जो सोचो जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत विशालकाय और जटिल, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बात क्लियर होता है। अगर इसको फील करना है ना कभी, तो टेक सम स्मॉल लोहा का वायर, ठीक है, लोहा का वायर, और सारे लोहे के वायर को ऐसा करके ज्वाइंट करके बॉल बना, और फिर उस बॉल को ट्राई एंड प्रेस इट विद योर हैंड्स। विल इट बी वेरी इजी टू प्रेस और नॉट वेरी इजी? व्हाई? बिकॉज़ द इंडिविजुअल्स आर स्टक, राइट। जो छोटे-छोटे लोहा के, तो वो तार तो मुड़ जाता है, राइट, बट क्योंकि वो तार उस स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुका है, तो इसलिए उसको मोड़ना उतना आसान नहीं है। ये कहानी यहाँ भी चल रहा है, राइट। सो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प अस एक्सप्लेन ऑल दिस प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टी बता दो। सुनना ध्यान से, कैसे हार्ड कब होगा कोई सब्सटेंस, हार्ड या सॉफ्ट कैसे डिटरमाइन, हार्ड या सॉफ्ट कैसे डिटरमाइन, बॉन्ड से। अभी भी तो बोला है, बॉन्ड अगर मजबूत है तो हार्ड सब्सटेंस, अगर सॉफ्ट है ये बॉन्ड हार्ड, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर भी रिजिड है। रिजिड मतलब अब इसको अपनी जगह से हिला पाना। सोचो अगर ये कार्बन का एक बड़ा सा ऐसा करके बॉल बना हुआ है, राइट। अगर मुझे बोला जाए कि इस कार्बन को जाके पोक करो, विल इट बी वेरी इजी टू पोक दिस कार्बन थ्रू दैट स्ट्रक्चर? नॉट वेरी, वो छुपा हुआ है अंदर कहीं पे, राइट। इसको छू पाना पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट वेरी इजी टू मूव इट फ्रॉम इट्स लोकेशन, अपनी जगह से। तो हार्ड और रिजिड होगा, क्लियर। हार्ड रिजिड क्यों होगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अपनी जगह से उस स्ट्रक्चर में से अपनी जगह से उसको हिला पाना पॉसिबल नहीं है। हाई डेंसिटी कब होगा? किसी भी चीज का डेंसिटी कब होता है? जब बहुत सारा माल छोटे जगह में पैक होता है, कि बहुत सारे जगह में छोटा सा माल पैक होता है? बहुत सारा माल छोटे जगह। तो सोच यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग, छोटे छोटे बॉन्ड्स हैं, तो कार्बन एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। सारे कार्बन एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अपनी तरफ खींचेगा तो उसका जो फैलाव है वो छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, राइट। सो इट विल बिकम अ वेरी हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट जो कि दिख रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी चीज बॉयल कब होता है, या बॉयल होता है तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ले लो या मेल्टिंग पॉइंट ले, दोनों मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ फील ऑफ, क्योंकि सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट विल मेक मोर सेंस। कोई भी चीज मेल्ट कब करेगा? इनफैक्ट दैट शुड बी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट।
इसकी मेल्टिंग इतने बॉईल कर रहे हो तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ना सॉरी 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एनर्जी सॉलिड लिक्विड बनेगा अभी ठीक मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्या बनता है सॉलिड लिक्विड बनता है राइट जब ये चीज मेल्ट कर रहा होता है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड बनता है सॉलिड लिक्विड कब बनता है जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक हो जाए वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक या बॉन्ड वीक हो तो उसको तोड़ना आसान होता है कि स्ट्रॉन्ग हो तो तोड़ना आसान तोड़ना आसान होता है स्ट्रॉन्ग हो तो तोड़ना डिफिकल्ट वीक हो तो तोड़ना यहाँ पे बॉन्ड कैसे है स्ट्रॉन्ग तो तोड़ना मुश्किल अगर तोड़ना मुश्किल है तो इसका क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो ही सॉलिड से तो जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होंगे वो सॉलिड वो ज्यादा है कम है बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए कि कम देना पड़ेगा क्लियर है कहानी तो पूरा का पूरा आंसर स्ट्रक्चर से आ रहा है कि स्ट्रक्चर इतना जटिल इतना रिजिड हो चुका है इतना हार्ड हो चुका है इसको तोड़ पाना आसान नहीं है और अगर तोड़ नहीं पाओगे तो वो हार्ड भी होगा वो रिजिड भी होगा उसका डेंसिटी हाई भी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई अ नॉन कंडक्टर कोई भी चीज कंडक्ट कब करता है जब उसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स और इन अदर वर्ड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होना चाहिए बैलेंस बॉन्ड राइट आउटर शेल में सोचो कार्बन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चार कितने बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी ग्रेफाइट है ना तो ग्रेफाइट की बात ही नहीं क्लियर है हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हेल्प अस टू आंसर दिस क्वेश्चन the compact एक एक करके लिखेंगे हाई डेंसिटी जो बिल्कुल हाई डेंसिटी की बात कर रहे हैं the compact and rigid 3D arrangement of carbon atoms in diamond the compact and rigid 3D arrangement of carbon atoms in diamond gives it a high density the melting point is high next answer the melting point is high because a lot of energy is required a lot of heat energy is required to break the network of strong covalent bonds to break the network of strong covalent bonds in the diamond crystal next the non-conductivity of diamond can be explained as follows carbon has a valency of 4 that is has 4 valence electrons carbon has a valency of 4 since each carbon atom in a diamond crystal is linked to 4 other carbon atoms all the 4 valence electrons are used up in formation of bonds
since there are no free electrons, since there are no free electrons, therefore it is not able to conduct electricity. It is not able to conduct electricity. ठीक, क्लियर है? स्ट्रक्चर किसे एक्सप्लेन कर रहा है? नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट. Graphite also has crystalline structure. Graphite also has crystalline structure, but its crystals consist of layers of carbon atoms, layers of carbon atoms each carbon atom in a graphite layer is joined to three other carbon atoms by strong covalent bonds. To form flat hexagonal rings. The various layers of carbon atoms in graphite, are quite far apart, and thus no covalent bond can exist between them. No covalent bond can exist between them. These layers instead are bonded. These layers instead are bonded by weak van der Waals forces. These layers instead are bonded by weak van der Waals was the name of the scientist found these forces. Weak van der Waals forces due to these weak forces, these various layers of carbon atoms can slide over one another. Next slide. Due to the sheet-like structure,
graphite is comparatively soft substance. Graphite is a comparatively soft substance. So I have tried to make the structure. Of course, you will have to go back, look at your books and get a real feel of the structure. But समझने के लिए मेरे ख्याल से so I'll be a volunteer. एक और अगर science so so this is the structure that we are talking about. Hexagonal structure है. अरे थोड़ा मजबूत रहो. अरे strong bonds है. Can you see? Can you feel? Can you understand? क्या चल रहा है? हम लोग हेक्सागन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखो हेक्सागन. अरे थोड़ा धीरे बोलो यार. So this is the hexagonal structure we are talking about. Can you see? Can you feel? Right? ये वो एक हेक्सागन है जिनकी हम बात कर रहे हैं. और इन हेक्सागन के कितने वर्टेक्स हैं? 6. हर एक में कौन बैठा रहेगा? कार्बन. और ये जो पेन है वो क्या दिखा रहा है? इन दोनों के बीच का बॉन्ड. ठीक. ना बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाता. राइट. बात यहीं पे खत्म नहीं होता. ये जो है ये भी अपना एक हेक्सागन इधर बनाएगा. तो ऐसा एक पूरा लेयर बनेगा, पूरा शीट बनेगा. हेक्सागन लेयर. ठीक. देन इफ यू गो डाउन लिटिल देयर विल बी अनदर सच लेयर. बट ये दूरी और वो दूरी इतना ज्यादा होगा कि अब ये कार्बन और वो कार्बन क्या नहीं बना सकता? बॉन्ड नहीं बना. कौन सा बॉन्ड नहीं बना? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता. यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो सकता. तो उसमें एक दूसरा वीक फोर्स आता है निकल के, जिसका कैलकुलेशन भाई साहब ने किया, वैन डर वाल्स फोर्स. सो दोस आर वीक फोर्स. आराम से टूट जाता है. स्ट्रक्चर समझ में आया? अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग कहानी लिखेंगे कि क्या हम लोग इस स्ट्रक्चर को बेस बना के कैन वी अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. तो मेनली 2-3 प्रॉपर्टी की बात करेंगे. बताओ सॉफ्ट क्यों होगा? सॉफ्ट क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड्स कमजोर है. सोचो अगर बॉन्ड्स कमजोर होगा तो इनको एक दूसरे पे स्लाइड करना आसान होगा. तो हमें कैसा फील होगा? पाउडरी सॉफ्ट. देखो जैसे लगता है ग्रेफाइट. दैट इज व्हाई यू फाइंड इट स्मूथ एंड स्लिपरी. पिघलाना कंपैरेटिवली आसान होगा, है ना जी. व्हाट अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हर एक कार्बन, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, इसको कार्बन बोलते हैं. इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2 3. तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री. To do that calculation, you find for each carbon atom there is 3 more connected to it. Right? I hope देख सकते हो. यहाँ पे फिर ये भी connected होगा. So each of them will be connected to 3. Right? ये जो ये भी इसके साथ इसके साथ इसी तरह. बट क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता, इससे चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्ट कर पाएगा. क्लियर? निकल जाओ. लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? सॉफ्ट सब्सटेंस. इट इज द सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट. उसको बड़ा मिलने इंग्लिश में देखो. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because in the graphite crystal each carbon atom is joined to only three other carbon atoms by covalent bonds. Three other carbon atoms by covalent bonds. The fourth valence electron of each carbon
the fourth valence electron of each carbon atom is free to move. It's free to move due to the presence of free electrons. Due to the presence of free electrons, a graphite crystal conducts electricity. अच्छा, one small line on melting point and then we will stop. Melting point इसका high होगा low होगा, relatively low, समझना बात, compared to diamond low, but खुद में अभी भी bonds तो carbon bonds ही हैं, right? These are still very मजबूत bonds. Only जो fourth bond था वो नहीं है, right? वहां पे van der Waals force है, but otherwise the bonds are still those strong covalent bonds. तो कंपेयर टू डायमंड थोड़ा सा कम होता है, बट अगर इन जनरल पूछा जाए कि ग्रेफाइट का बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कैसा, हाई या लो, आंसर इज प्रीटी हाई, राइट? कुछ 27-28 डिग्री कुछ होता है. इनफैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज, but we'll see uses tomorrow, we use graphite as lubricant, right? ग्रेफाइट जिसको होता है तो lubricant यूज करते हैं, और वहां पे यूज करते हैं जहां पे हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस हो रहा हो, राइट? अदरवाइज वो नॉर्मल लुब्रिकेंट जो कि हाई टेम्परेचर ऑपरेशन में लिक्विड बन जाते हैं या उसके साथ आते हैं, वो फिर यूज नहीं कर पाएंगे. इसीलिए ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर एरिया में लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है. ठीक है, सो कंपेयर टू ग्रेफाइट डायमंड कम होगा, बट इन जनरल उसको लिखना चाहिए तो कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो हाई. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द यूजेस.